12-year-old Dileep Meghwar has always dreamed of going to school. But before he was even born, his father Punjo borrowed money from the owner of this brick kiln. So the entire family has been trapped here trying to pay their debt by making bricks. The Meghwars shared their story with us over 6 months ago. Hundreds of people reached out asking how they could help, and a Pakistani NGO made it their mission to free them. But it's not that simple. ये काम मुश्किल और टफ है. हमें धमकियां भी मिलती हैं भट्ठा मालकों की तरफ से भी. Lawyers have called this form of work bonded labor or modern-day slavery because the workers aren't allowed to leave. And landlords don't even tell them how much interest they're adding on the debt. So why is it so hard to escape bonded labor? And what makes this such a risky business? This is one of the biggest brick kilns in Pakistan. It's in the middle of the Thar Desert. About 150 families live here making bricks. And many of the workers are children who were born into bonded labor. Dileep started mixing mud when he was 7. His family needs to make 1,500 bricks every day to keep up with their loan payments. They get paid $1.50 a day and are told that another $1.50 goes toward their debt. The landlord tells them they now owe around $600, but he hasn't shared any paperwork. The Meghwars barely make enough to eat, so they are forced to keep borrowing more. Dileep and his family live right by the kiln. Sometimes Dileep wishes he and his siblings could just enjoy their childhood. Zahid works for a non-profit that helps free families from bonded labor. He's never met Dileep, but he was part of the same Insider documentary. And in some places, more than half weren't even 10 years old. Zahid's own relatives were trapped at a kiln, but he was born free, and so were his 2 sons. और मुझे जब उसका ये जुमला लगा कि मेरे पास खेलने के लिए कुछ नहीं है, तो उस जुमले ने जब डॉक्यूमेंट्री में मैंने देखा तो मुझे सोने नहीं दिया. मैंने कहा कि मैं जब भी पहली बार भी दिलीप से मिलने जाऊंगा तो एटलीस्ट इसके लिए वो चिप्स और बैट बॉल ये जरूर लेके जाऊंगा. Zahid finally met the Meghwars in May. तो डॉक्यूमेंट्री थी मिलण आए तो सां तो बैट बॉल जो चयो कोने ही बैट थई ही बॉल थई एडा ही जूस है अथई तुझे ला सामान चिप्स विप्स तो किथे तो पी डॉक्यूमेंट्री तो ॾिठी जगह ठही हुई क्या हाल है. Breathing in dust under the scorching desert sun and firing bricks in massive underground. जो कह रहा तू ही मुके पूरी खुशी थे जने वीडियो ॾिठम ने अञा के कोन कया रास्ते बे गया दिलीप. That day, Zahid promised the Meghwars he'd set them free. लेकिन सबसे जो मुश्किल मरहला मुझे लगा वो इनको सिर्फ ये रियलाइज कराने में लगा कि आप आज़ाद हो सकते हो. Bonded labor is banned in Pakistan,
But Zahid still has to go to court to free workers, which can take months. He says paying back what a family like the Meghwars supposedly owes is the quickest way to free them. हर बार जब भी हम उनसे उस फैमिलीज़ के बारे में पूछने जाते थे कि भाई दिलीप की पूरी फैमिली पे कितना कर्जा है, और उसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही थी। जब हम उससे रिटन प्रूफ मांग रहे थे तो उसके पास कोई नहीं था। अस्सलाम वालेकुम प्रो। But the NGO he works for has had success. They've released 18,000 workers by court order since 2005. देखो, डर तो महसूस इसलिए होता है कि जब हम ये काम करते हैं, लोग रिलीज़ करा के ले आते हैं, तो भट्ठा मालकान जो है वो माफिया है। वाइफ भी कहती है छोटे बच्चे हैं, तुम इस तरह के कामों में ना पड़ो। After months of chasing the kiln owner, Zahid finally paid their debt. Now he's here to help them move. The Meghwars don't have much to pack, so they're almost ready to go. Dileep wants to play cricket with his friend one last time before they leave. सोचा ही तो आऊं निकले उन्होंने जो कर रहा है वो शायद की निकलता पाके सजा गरीब बिठा आऊं आज थी वञा तो जरा हु गरीब बिठा असांखे दुख थींदो दुख ज़ाल में थींदो पर आऊं अकेलो निकरी आयो त आऊं त आदा थे मूं जड़ा हज़ारे माण्हू फाथल आहिनि। While the family said its goodbyes, Zahid visited Punjo's mother Vasanti, who lives in a shack nearby. काकी वसंती केड़ा हाल है? खुश आई? She has decided to stay behind. तब वरी छा थियो, बुखार थियो छा? बुखार बा पेट में सूर तो थिए। हां हां ओकड़ो मथे में सूर, पासे में सूर थिए तो। There are no doctors here, but Zahid's NGO has paid for her to be treated. And she doesn't have to work anymore. हां खुश आया हां वडी तुजी मेहरबानी पुट तू मुजो पुट आई बच्चो आई वडी मेहरबानी आऊं पांजे। When he returned from meeting with Vasanti, Dileep had disappeared. और वो हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था, परेशानी थी कि यार पूरा काम हो गया। और Some workers told Zahid that the kiln owner had locked Dileep in his office. We contacted him to get his side of the story, but he didn't respond. Dileep was back home the next day. He wouldn't say what happened to him. कि ये पूरा खानदान बड़ा डरा हुआ था और ये भट्ठा माल के इन्फ्लुएंस में था। Dileep's clothes were also torn up, so Zahid took him shopping. पैक थल पे आए ही सही है? ये सही है। पूरा बाहर कर, जबरदस्त, ठीक है। ॿियो वॾे माल ते इन्हनि शौक़ु आहे पाण असीं ग़रीब में कोन था पुॼी सघूं जॾहिं लड़े अलावा वरंदो तॾहिं मान को माल बि थी पए। काका केड़ा हाल आहिनि? मानी पिया खाओ यार? कुछ जुती ॾेखारियो दिलीप ला सुठी। दिलीप पसंदि कर। दिलीप हलिया किताब वठूं, पेंसिलूं कापियूं। अब केड़ा हाल आहिनि? खुश आहीं? बेभित ज़बरदस्त, माना पढ़ी वेंदे न? ही ते तारो, थे थेलो, टे टोपी, टे ठूठ। यार तू होशियार लॻो पियो ई। हिन में घणा आहिनि? ठीकु आहे, शार्पनर, पेंसिलूं, पीगड़ूं, ॿ रबड़, कापियूं, किताब, स्लेट, ठीकु आहे, विझ हिन में। ज़बरदस्त, ठीक है। Zahid noticed that Dileep wasn't feeling well, so he took him to the doctor. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कंदो बठे ते कम, बुखार अची वियो आहे या हीट स्ट्रोक लगी हुई आहे, थोड़ो चेक करियोसि।
Many kiln workers get sick because of all the dust that they're breathing in. Lung disease is the leading cause of death for children there. फेफड़े भी थोड़े कमज़ोर हैं, दमे की भी शिकायत कर रहा है, खांसी भी है। फौरी तौर पे अभी हम इनको बुखार और सर के दर्द की दवाई दे रहे हैं। किताब थैला है, जूती है, कपड़ा है। देखो अरे फोन ला दे, फोन किताब गिरे 12 ये दीदार पढ़वा रहा है। Dileep wanted to try on his new clothes right away. इतने असांखे खुशी थी त मदद करे, असांखे खुशी थी इतने मदद करे, असांखे मांखे खुशी थी, दिल खुशी थी, दिल असांजो सभा खुशी थी है न। ई कॾहिं सोचियो कोन अहिड़ो ॾींहुं ईंदो। Then, Zahid's NGO decided to help the families start over in a town called Azad Nagar, which means the Free City. This is everything they own. But Dileep says they'll be carrying much more in their hearts. याद दे ने बठे जगह कम कोंदा विसरे न। याद दे इंदे जगह सरी वण दो याद आइन पचवी खला। Azad Nagar is about 180 miles away from the kiln. So this is the farthest he and his siblings will ever have gone. It will take them about 4.5 hours to get to Azad Nagar. Locals also call this the colony. NGOs like Zahid's set it up to resettle families here if they can't afford their own homes once they are freed from kilns. आज़ाद नगर ऐसी जगह है जहाँ पे वो फिर सकते हैं और अपना जो भी काम उनके दिल में आए वो आज़ादी से कर सकते हैं दिहाड़ी पे। अब उनको बॉन्डेड लेबर होने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ से रिलीज़ हो चुके हैं। About 8 to 10 new families move here every month. And there's always a traditional welcome with flowers to celebrate their safe arrival. Rani told us she mainly kept to herself when she lived at the kiln. So this is a lot to take in. Many of the people here still work at brick kilns, but they're cleared of debt. Now it's time for the Meghwars to move into their new home. This one's pretty basic, but it's still bigger than their old shack. Without debt looming over him, Punjo can decide to go work at a kiln again if he wishes, or he can do something else. मुलाजमत के हवाले से हम इनकी कोशिश ये करेंगे, जैसे मैंने कहा कि इनको हम अल्टरनेटिव स्किल्स की तरफ ले आएंगे। हम उनको टेलरिंग के कोर्सेज करवाएंगे, हम उनको जो मोटर मैकेनिक से लेकर मोबाइल मैकेनिक। Even though residents say life here is better than at the kilns, they still don't have running water. But Rani says to her, there's really just one thing that matters. Her son Dileep is at the school around the corner. All of the children here came from brick kilns and had never learned to read.
उते लगे सिर वणंदा चेलियन में सूर हथन में सूर सफ़ा जल्दी पवंदा हिते अञा सही आहे ईअं कॾहिं कोन सोचियो जॾहिं अलाह वरियो त लड़े वीडियो मथे वियो तॾहिं सोचणो खपे पहिरीं त विच में कोन सोचियो न But he still worries about the friends he's left behind. वॾो थिए ग़रीबनि जी मदद कंदो